This is Dr. Meena Sahay, retired professor of physics, Ranchi Women's College, continuing my lecture on solid state physics and lattice vibration for physics honors students. Phase velocity of the wave. The phase velocity of a wave is defined as the rate at which a point of constant phase advances in the medium along the direction of wave propagation. For simplicity, we consider here the point of constant phase to be at zero phase. So equation 8 say the phase angle that is omega t minus kx, and it will be 0 if omega t is equal to kx, that is x is equal to omega by k into t, and putting the value of omega and k, 2 pi nu divided by 2 pi by lambda into t, so x is equal to vp into t, and this vp is my phase velocity, equation number 13, where vp is equal to v lambda w by k is the constant phase velocity of the phase point. From equation 12 that we have, Vp is W by K is equal to under root C by rho, and this is my equation 14. Using equation 14, equation 6 can be written as delta squared U by delta x squared is equal to 1 by Vp squared delta squared U by delta t squared, and this is my equation number 15. The phase velocity of or is independent of the frequency and wavelength, and it but depends on the elasticity of the medium and the density. So next now we will do the normal modes of vibration in a finite length of a continuous medium. अब नॉर्मल मोड्स का मतलब क्या है? We mean the number of independent solutions of the wave. Equation given by, ये जो equation है delta squared u by delta x squared is equal to 1 by bp squared into delta squared u by delta t squared. अब यहाँ पर we satisfy a given set of boundary conditions. अब हम लोग consider करते हैं a line of length L of the continuous medium which is rigidly fixed at both the ends. Under this condition, when the medium is set into vibration, तो क्या हो जाता है? Stationary waves are set up, जैसे कि आप लोग acoustics में पढ़े हैं, whose equation is given by u is equal to u0 sin kx sin omega t, and this is equation 16. अब according to the boundary conditions, वो कहाँ पर है? u equal to 0 at x equal to 0 and at x equal to L, जो दोनों end points उसके जो attached हैं at all times. Thus equation 16 ये जो है holds for all time only if sin kl is equal to 0, that is equal to sin n pi. यहाँ से हमको मिल जाता है k is equal to n pi by l, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. That is k is equal to pi by l, 2 pi by l, 3 pi by l, 4 pi by l and so on. Equation number 18. Every value of k given by equation 18 represents a normal mode. क्या represent करता है? Normal mode. The value of n is equal to 0 is excluded because it gives k is equal to 0 for all time, which makes u equal to 0, thus making all the particles to be permanently at rest. इसलिए हम लोग यहाँ पर n equal to 0 को नहीं लेते हैं. The frequency spectrum is thus discrete, with each value of k corresponding to a different value of frequency, as seen by equation number 12 जो हम लोग किए थे. अब group velocity, हम लोग phase velocity किए. Now what is group velocity of harmonic wave? The group velocity is defined as the velocity of a group of wave over its envelope. It is the velocity with which the energy is transmitted along the direction of wave propagation. इसलिए group velocity बहुत important है क्योंकि this is the velocity with which the energy is transmitted. Let us consider two waves of equal amplitude but of slightly different frequencies, W and W plus dW, and the propagation constants K and K plus dK respectively. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोनों वेव का? एक का होगा y1 a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 19, और दूसरे का हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a cos w plus dwt minus k plus dkx, and this is my equation number 20.
By the principle of superposition of waves, the resultant displacement is given by y is equal to y1 plus y2. तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को, तो मेरा ये आपका आ जाता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स. और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा आ जाता है y इज इक्वल टू 2a cos ट्वाइस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टी ओमेगा टी माइनस एक्स डी के डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस माइनस टी डी डब्ल्यू प्लस एक्स डी के बाई 2. और यहाँ से हमको आ जाता है y इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस एक्स डी के माइनस टी डी डब्ल्यू बाई 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 21. अब ये इक्वेशन 21 क्या दिखाता है? दिस शोज दैट द रिजल्टेंट वेव, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट एज द ओरिजिनल वेव. Since dw and dk are small for a considerable range of values of x, the factor, ये जो factor है ना यहाँ पर, ये जो cos x है x dx plus minus t dw by 2 is approximately constant, and the wave surface for a large range of x is given by y is equal to a cos omega t minus kx, and this is my equation number 22, जहाँ वे a जो है कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 2a cos x dk माइनस टी डी डब्ल्यू बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 23. Equation 23 is the equation of the wave packet or the group of waves formed. Comparing equation 23 with the equation of a simple harmonic motion, we find, तो क्या फाइंड करते हैं कि amplitude is in the form of a wave of amplitude 2a, यहाँ पे ये जो 2a है ये आपका दिख रहा है, and speed dw by dk. Hence the group velocity of the wave packet is vg is equal to dw by dk. This is equation number 24. अब यहाँ आप ये फिगर्स देख रहे हैं, यहाँ ये फिगर में पहला वाला फिगर ये जो दिखा रहा है, एक आपका A है वन वेव एंड B इज़ अनदर, ये डॉटेड लाइन से अनदर वेव. और जब ये प्रोपगेट करता है तो ये देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये वेव है, और ये वेव पैकेट से ये एनर्जी इस तरह से आपका ये प्रोपगेट हो रहा है. दिस इज़ माई ग्रुप वेलोसिटी. अब ये दोनों के बीच में, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? वी पी फेज वेलोसिटी डब्ल्यू बाई के, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी पी इंटू के. और ग्रुप वेलोसिटी है डी डब्ल्यू बाई डी के, सो डी बाई डी के, यहाँ डब्ल्यू के बदले में वो डाल दीजिए वी पी के. और हमको वी जी इज इक्वल टू, इसको हम ओपन आउट कर देते हैं, तो वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के, और वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस 2 pi by lambda d by वी पी बाई डी बाई 2 pi by lambda. और इसमें आपको आ जाता है वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा. दिस इज माई रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी एज गिवन बाई इक्वेशन नंबर 25. It should be noted that in a pure harmonic wave, the phase velocity and the group velocity are the same. मतलब प्योर हार्मोनिक वेव है तो दोनों सेम है. इन a group of waves making a complex wave and wave packet, the phase velocity and the group velocity are two different entities. The group velocity and the phase velocity are equal when omega is a linear function of k, so that w by k, ये जो आपका है, and dw by k are equal. This is true for electromagnetic waves in vacuum because the velocity is constant and is independent of frequency and wavelength. These two velocities are different when w is a function of k. This is the case when light passes through a dispersive medium whose refractive index is a function of frequency. This phenomena is called dispersion. This is also found in case of elastic waves in a medium composed of discrete atoms which are bound together by forces obeying Hooke's law, especially when the wavelength is comparable to the interatomic distance. That is why we have done this, because we are going to do about the vibration, elastic vibrations in the solids. Thank you.